What up? Sup, people? It's me, Yoksh. Challenge week, day 3. Hi. Sup? Sorry. I'm a bit excited. Just that's it. Ba 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 ba. Driving all night. वो चुप रहती है अरे 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 ओ अरे 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 ओ वो चुप रहती है जब मिलती है तब क्या होता है अरे 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 ओ अरे 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 Congratulations to your मामा का लड़का and good luck. मामा के लड़के ने पढ़ाई की थी, तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो. तो पढ़ा कीजिए सर, पढ़ा कीजिए आप, तभी जाके कुछ होगा. टाइम वेस्ट करने से थोड़ी ना होता कुछ. मेरा टाइम वेस्ट करने आ जाता है. सॉरी. सो बार करा. I know. But bro, I can be best. ये नमी पास आके न तू दूर जा. अरे तू तो बुरा मान गया. हर कोई ताने देता रहता है. अरे
I was being sarcastic. बुरा मत मान भाई. नहीं बुरा नहीं माना जैसे. अरे होता है भाई. तुझे लगता है मुझे सूत्र संस्कृत के सूत्र सुनने को मिलते हैं सुबह? मुझे भी कभी कभी सुनाते हैं घर वाले. Of course, I'm almost 25, so कुछ ना कुछ तो बोलेंगे घर वाले भी. वो भी तो चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ. अब घर पे बैठा बैठा कितने दिन रहूँगा. I really feel bad when parents दूसरे के बच्चे से कंपेयर. Well, they want the best for you. That's why. पता नहीं मैं गलत हूँ या सही. हाँ वो तो नहीं, मैं नहीं बता सकता तू गलत है या सही, बट if you are trying, well, just keep trying, man. Nobody is गलत, nobody is wrong. सही गलत कुछ नहीं है समय. मैं अपने बसा कहने लगा पास आके न तुम दूर जा. काफ़ी बार ऐसा लगता है मैं बस एक गलती हूँ अपने पेरेंट्स की, मैं किसी लायक नहीं. अरे अरे रे 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 रे. What are you saying, boy? कोई बात नहीं, होता है. That's the life, bro. You have your up and downs. That's fine. Be strong. Hi. तुझे पता है तेरी वॉइस क्या है? क्या लायक है तू? Just wait कर तेरा वक्त आने तक. And today we continue overreacting. Section 1. Is it section 1? No, I'm part 1. Section D. No, part 1D. A more complex state debugging React apps. जो भी आता है घर पर हर कोई कंपेयर करता है कि कोई भी अप्रिशिएट. Yeah, same thing happens with me, bro. Don't think you are alone. दूसरे कंपेयर कर रहे तो करने दे, तू मत कंपेयर कर खुद को. मैं भी कर सकता है थोड़ा बहुत तो, बट जिससे तू कंपेयर करना चाहता है उससे कर. हाय, ज्ञान क्यों दे रहा हूँ मैं? प्रीवियस डे आपके
आपने आस्क करा था why I come here and spend time because I feel alone. इधर नॉर्मल फील होता है. Damn, that's why इधर स्ट्रीम पर आ जाता हूँ. हाँ. It's fine man. आ जाएगा, कोई बात नहीं. Why do you think I stream? It's the same reason. I do wanna learn stuff like I mean, I don't have problem with learning like alone, but it like sometimes it feels very much alone. Yeah, lonely. I mean, so that's why I stream. योक्ष और जतिन एक ही घर में रहते हो क्या? अरे ब्रो है ना, मेंटल ब्रेकडाउन पे चल रहा है इसका आज. I'm suffering since I was born. इसी जब देखो हर वक्त ही यहाँ होता है. अरे एक काम किया कर, स्ट्रीम चला के रख दिया कर. बाकी तू अलोन फील नहीं होगा तुझे, एंड अपना काम करा कर इंस्टेड ऑफ चैटिंग. अभी तेरे को ऐसा फील होता तो डैम गलत टाइम पे बोल दिया. या गलत टाइम में भाई, अभी नहीं है. तू समझ वक्त की नाजुकता को समझो प्रिय मित्र. भाई कुछ नहीं होता तो KMC के MKC. Just focus on your hobbies. Of course, man. Focus on what you like, you know. Fuck the relatives. Fuck whoever gives you advices. You know, 2 दिन पहले मैं तेरे को क्या बोल रहा था कि मैं एडवाइसेस नहीं लेता. That's the reason. जो तू अभी फील कर रहा है ना, तो मेरे से उम्र में छोटा होगा शायद. जो तू अभी फील कर रहा है वो मैं कर चुका हूँ. तभी मैं नहीं लेता किसी की एडवाइस. फक एवरीवन. मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ. मेरा भी मूव ऑन नहीं हो रहा था बंदी से. ये कैसी इतना ग्राइंड किया भी याद ही नहीं आती. Damn. Oh, you had a bandi? Never told me about it. Damn, man. I don't. काफ़ी बार ट्राई करता हूँ लोगों को इग्नोर करो, बट ऑलवेज हर बार वो बातें ही इसमें आ जाती हैं. हाँ, it's quite hard to ignore, no, but like mind distract कर. 2-3 दिन होता है मूड ख़राब, रेस्ट ली. मैं भी वही करता हूँ. 2 दिन अगर मेरा किसी ने मूड ख़राब कर दिया, उस दिन मैं स्ट्रीम नहीं करता. फिर 2 दिन मेरा मूड ख़राब रहता है, फिर मैं कुछ भी करता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ. I mean, just so that my brain shuts off and like it stops thinking about the stuff. And back. And in only 2 days I get back on the track. बाकी इंडियन पेरेंट्स का भाई तो कुछ नहीं कर सकता. वो उनका मेथड गलत हो सकता है, बट इंटेंशन ऑलवेज सही होगा. That's I agree with that. I mean they are not educated enough about the mental health and all that kind of stuff. But like you have to be strong. You have to balance it out.
like my parents also used to do that, but now they don't do. Now they don't say much because they have seen my condition, like my moods, my condition. So they kind of have stopped. I mean, they rarely see that. Anything like they know I'm doing something now. So it's fine, man. You have to give some proof to your parents, and they will give you some time. That's it. Give them some kind of proof. पहले मुझे भी होता था फालतू का टेंशन, ओवर थिंक. बाद में पता चला वेला हूँ इसीलिए बिजी रहो, घर वालों से बात करो एंड ऑल. है आप. वैसे मैं घर वालों से इतनी बात तो नहीं करता मैं, बट मैं बिजी रहता हूँ. यू नो, if you are not doing something, if you have too much time, all you're gonna do is overthink. And that overthinking, man, it kills. Overthink kills people. So stop overthinking and start doing your stuff. Start being busy. I wish कि जो चीज़ मुझे फील हो रही है वो और किसी अच्छे को ना हो. ऑलरेडी फील हो चुकी है भाई मुझे तो. मुझे ऑलरेडी फील हो चुका है तब कुछ. पहले तो मुझे भी कंपेयर करते थे, बट नाउ दे डोंट. नहीं भाई, अभी कल ही मैंने सुना है. अब पेरेंट्स से नहीं था, बट यू नो मैंने घर में पढ़े हैं तो अब सुना देते. आप क्या करें भाई. और इतना दिल पे नहीं लेता मैं. माई पेरेंट्स आर डिफरेंट. पहले बोलते थे 60 भी लेकर आ जाएगा तो अच्छी परसेंटेज है, बट 74 आ गए. उसके बाद भी बोल रहे थे थोड़ी और मेहनत करता 80 85 90 आ जाते हैं. अरे परसेंटेज मैटर नहीं करता. मेरा खुद का नहीं आया 80 85 तो. कभी नहीं आया भाई मुझे मेरा तो. भाई हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है. दैट. बट बुरा जब लगता है जब किसी और के कारण करते हैं. माँ कंपैरिजन तो करते ही हैं. अभी उनको भी तो है ही भाई. किसी और का बच्चा कुछ कर रहा है तो मेरा बेटा क्यों नहीं कर रहा, है ना. कि भाई तू भी कुछ कर. वो यही सोचते हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं, बट इंस्टेड भाई अब लेने वाला तू है तो किस तरीके से उनके बातों को अपने ऊपर लेता है. नेगेटिव वे में लेगा कि मैं तो यूज़लेस हूँ, कंपेयर कर रहे हैं मुझे. तो भाई यू नो लाइक यू गोना गेट डिप्रेस्ड. एंड सेकंड तरीके से लेगा कि भाई दूसरे से कंपेयर कर रहे तो ये बोल कि भाई ये क्या है, मैं इसे अच्छा करूँगा ना, और मेरा पास है ही नहीं ये कि मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं है, तो कंपैरिजन ही गलत है. तो ये भी सोच सकता है भाई. मैं तो यही सोचता हूँ. अब किसी का बच्चा, किसी का रिलेटिव का बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है तो मुझे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हट ना भाई, मुझे नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब. कौन सी क्लास की परसेंटेज है. इंडियन पेरेंट्स दे जस्ट रीच बीट यू. लॉ ये ठीक ही रह जाए. गो लाइक आई विल बिकम फार बेटर देन who I being getting compared with. वैसे तो ये गोल बहुत छोटा है. They are just comparing, not seeing his parents.
not seeing his parents, and they are very rich, not rich, very rich, and like they have BMW. Shut it. Fuck it. Do your thing, man. अब मेरे पेरेंट्स कभी मेरी कंपैरिजन करते कि उसका देख, उसका बच्चा नौकरी लग गया, ये कर गया भाई, मैं सोचता हूँ कि यार क्या है छोटी छोटी बातों में, आई मीन ये लगे छोटी मोटी 10-20 हज़ार या 50 हज़ार की नौकरी तो क्या ही होगा भाई, मेरा तो पार्टी पड़ने वाली ना, चाहे गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई या क्या है भाई, मैं इससे ज़्यादा कमाऊँगा ना बिना गवर्नमेंट जॉब करके, ऐसा सोचता हूँ भाई मैं तो। आई डोंट वाई, मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है फ़ोन को कहीं फेंक दूँ और किसी अदर पीसफुल कंट्री में जाकर नहीं चेंज करके लाइफ से प्रो दिल की बातें छीन रहा है भाई तू। हाँ अरे मैं हर रोज़ फील होता है भाई मुझे तो, तभी तो कर रहा हूँ ये सब कुछ तो सोचता है, मैंने सोच के काम भी चालू कर दिया मैंने तो। हाँ कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो मैं भी घर वालों को बोल ही देता हूँ कि भाई इतना दूर जाऊँगा कभी वापस ना आऊँगा सही में मैन, लाइक मेरे फादर 3-5 years में रिटायरमेंट होने वाले हैं, सो पीपल आर टेलिंग मी आप उसके बाद फैमिली में अर्निंग के लिए नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब कर ले कोई छोटी मोटी। डैम मेरी भी ऐसे बोलता भाई, तू योश को देख के सीख, मुझे 20-21 में ही 3 रोटी से ऊपर खाई ही नहीं जाती, वियर्ड लगता है। अब मन तो कर रहा ही कि 10,000 मांग लूँ कान्ये के कॉन्सर्ट के लिए, बट आई कांट, जबर नहीं करूँगा तो टाइम क्या बोला भाई, मुझे समझ में नहीं आया भाई तू यूश को देख के सीख, मुझे देख के क्या सीखेगा, मुझे 20-21 में ही 3 रोटी से ऊपर खाई ही नहीं जाती, वियर लगता है। मन तो कर रहा है कि 10,000 मांग लूँ खाने के कॉन्सर्ट के लिए, बट आई कांट, सोचा पर नहीं करूँगा तो। डैम खाने का कॉन्सर्ट मैंने कभी खाने वाने को नहीं सुना, बट she's so lovely, la 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 la. Sorry to create this, guys. Please keep on seriously. It's fine, man. Yeah, Akshit. Any update on your job? And also what you're doing recently. I wanna know what's happening. What's going on? It's okay, man. Take care. Take rest. सो जा, एक काम कर माइंड ऑफ करो and stop overthinking.
अब मैं तेरा ही रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। अक्षत, क्या कर रहा है तू? आई विल कम बैक आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर। या ऑफ कोर्स। मुझे लगता है तेरे घर वालों ने तुझे यूश की स्ट्रीम पे बकचोदी करते देख लिया, तभी कह रहे होंगे देख उसके पास PW है और इस यूश की स्ट्रीम पे बकचोदी करता रहता है। जोक नींद नहीं आएंगी पेरेंट्स से इतना सुनते क्या बात। भाई मैं बताऊं, एक बात बताता हूँ मैं। मुझे एक बार की बात है, शायद पिछले गर्मियों की बात है, 1 साल हो चुका है अभी तो। मुझे है ना एक बार इतना सुनाया था घर वालों ने, इतना भयंकर सुनाया था मुझे, मतलब मैं रोने लग गया था मैं। मैं इतना भयंकर रोया था उनके सामने आधे घंटे तक। एंड फिर भाई मेरे को गुस्सा आया भाई। अब तो है ना मैं बेड पे सोऊं ही नहीं। मैंने अपने कमरे से, जो बेड तो नहीं है मेरे पास, मतलब मैंने शिफ्ट कर रखा है। मेरे कमरे के अंदर खाट है 4 पाई, तो भाई उसको साइड में खड़ा कर फिर मैंने नीचे कुछ भी, मतलब एक दरी पे सोया करता था मैं। प्योर 2 महीने तक मैंने 2 महीने तक मैं नीचे आंगन में सोता था बिना किसी और चीज़ के। लेकिन इतना गुस्सा आया था मुझे खुद पे कि भाई अब तो है ना, अब तो नौकरी लग ही सोऊंगा मैं खटिया पे। फिर लाइक कहना ठीक है यार। फिर बाद में दिमाग ठंडा हुआ तो आ गया लाइन में मैं भी। भाई एक ही जापानीज़ वाली की थी, उसका तो आया नहीं। मे बी आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन गो, दैट्स वाई। व्हाट? एक ही जापानीज़ वाली की थी, उसका तो आया नहीं। मे बी आई डोंट हैव एनी experience in go. It's just there are a lot of jobs on Daijub. Apply it, man. Like, just give the interview. Don't think about it. Apply to all the fucking jobs. I don't know what you're doing. बाकी आज फिर 2 कंपनीज में किया है, एक इंडियन और जापानीज़। बाकी आज तो API गेटवे बनाया है और अभी जापानीज़ पढ़ने लगा हूँ। नहीं यार सही, बट मैं अकेले रहता हूँ, अकेले रोता हूँ। तब मैं क्या भाई सबके सामने रोता हूँ। उस दिन तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना। उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो उनके सामने निकल गए थे। वैसे तो मैं भाई अनगिनत बार रोया हूँ मैं तो। अक्षित भी देखा है, अक्षित ने भी देखा है मुझे तो। हाँ उतना वो चल छोड़ रहे यार। क्या बातें कर रहा हूँ मैं। थूक दिया इस पर। गॉड कुछ नहीं करने वाला, बट मैं करूँगा जो करना है तो वो तो बढ़िया। हाँ मैन, may you achieve your goals. अक्षित, तो क्या है यार, फिर क्या ही करना है। मुझे मेरे फादर उनके दोस्त के लड़के से कंपेयर करते थे, क्योंकि उनका बेटा मेरे ही क्लास में पढ़ता था, फर्स्ट आता था वो हर बार। एक बार दुखी हो गया 9th में, मैंने कुछ नहीं बोला चला गया। एक बार दुखी हो गया 9th में, मैंने कुछ नहीं बोला चला गया। है कहाँ चला गया? आधी स्टोरी है शायद। मैं काफ़ी बार सोचता हूँ लोगों को प्रूव करना है, आई एम नॉट अ लूजर, बट देन माइंड में आता है किसको प्रूव करूँ। मुझे किसी को प्रूव करने का मन ही नहीं करता। प्रूव किसी को नहीं कर रहा भाई। लाइफ की जो तेरे गोल्स हैं
उनको फुलफिल करने की, रीच करने की कोशिश कर। भाई मुझे किसी को प्रूव नहीं करना। मैं मेरी लाइफ में गोल्स है बहुत सारे, बस मुझे वो अचीव करना है, और बाकी फक द पीपल, आई डोंट केयर। शर्त लगी अगर मैं 9th में फर्स्ट आऊँगा मुझे आईफोन मिलेगा। जी फाट मेहनत के की BC फाइनली सीधा बिलो एवरेज से फर्स्ट आ गया। वो कांडो फोर्थ है न्यू टचिंग स्टोरी। नहीं फिर आईफोन थोड़ी ना मिला तुझे। शर्त किसके साथ लगी थी? आई मीन 10th क्लास में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब ये ना, एक लड़का था, वो भी मतलब टॉपर था 9th क्लास तक तो, बट जैसे ही 10th में आया, 10th क्लास के रिजल्ट्स थे, फिर बोर्ड तो था ही, मैं फिर आया था फिफ्थ आया था क्लास में मैं रैंक, एंड वो आया था 6th। लाइक वो टॉपर हुआ करता था स्कूल में। सारे टीचर्स लाइक उसकी बहुत चाटते थे, लाइक टीचर्स उसकी चाट रहे हैं हाँ, एंड फिर भाई 11th-12th में तो भाई मैथ ली थी उसी ने भी। कुछ नहीं आता था उसको, मतलब सब मैथ में भी रटता ही रहता था भाई। बहुत मजाक उड़ाते थे उसका। माँ वो अच्छी बात तो नहीं थी, बट या मतलब जस्ट बिकॉज तुम कुछ याद कर सकते हो, एंड उसकी वजह, उसका मतलब ये नहीं कि तुम इंटेलिजेंट हो भाई। यहाँ याद करने में बहुत भयंकर था वो बंदा डैम। आईफोन क्या हुआ ब्रो? आईफोन मिला था, आईफोन 7 पापा के साथ। और तुझे पापा के साथ? ओह डैम, आईफोन 7, गॉड डैम इट। फिर आईफोन पे बहुत जी फाट मेहनत की, पबजी में ख़राब हो गया डैम भाई। मेरा फर्स्ट फ़ोन आया था जब मैंने इंजीनियरिंग की थी। मतलब मेरी उस वक्त है ना, काइंड ऑफ पबजी मेंटली, उस वक्त है ना, मेरी दादी थी ना, वो आ, उनकी डेथ हो गई थी, तो उस वक्त है ना, उस वक्त मैंने बहुत पबजी खेला था, लेकिन खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो पबजी ने बहुत हेल्प की है मेंटली मुझे मेरी। फिर एक साल ही खेला मैंने, फिर आज तक हाथ नहीं लगाया। मैंने कभी शर्त वगैरह नहीं लगाई, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। मैंने नहीं लगाई भाई। अगर कोई शर्त से तेरा ही बेटर हो रहा है तो लगा लेनी चाहिए ऐसी शर्त ब्रो। मेरे पेरेंट्स का डर है वो मारेंगे अगर कुछ ऐसा करा तो। अरे अबे उस वक्त है ना, मेरी फैमिली में है ना, मैंने किसी की डेथ नहीं देखी थी, तो मेंटली यू नो होता है भाई, मेंटली बहुत ही प्रेशर होता है कि भाई कैसे डिस्ट्रैक्ट करूँ खुद को। अब यू नो तो समझ गया होगा शायद तू तो जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, लाइक यू डोंट नो, मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं। मेरे फादर इतने, मतलब मेरे फादर है तो नहीं, बट उनको गुस्सा आता है तो वो भी बोल जाते हैं कई कई चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बट ऐसा तो सही है, इतना टॉक्सिक जैसा वो चीज़ नहीं है। अच्छा, हर बात पे डांटते भी नहीं है वो तो मैं ही उनका बुरा मान लेता हूँ इतना तो कुछ कहते भी नहीं है। शायद नहीं लगाएं क्योंकि पेरेंट्स ने मना किया है, और स्टडी नहीं करेगा, जो पेरेंट्स हर वक्त कहते रहते हैं
That's so true. मैंने 10th में है ना, मैं कमरे के बाहर नहीं निकलता था, इतनी स्टडी करता था मैं, रात को नहीं सोता था मैं। 10th और 12th का तो टाइम ही अलग था। What's with this black and white filter? Just trying out something new. I was bored, you know. You get bored when you do the same thing over and over again. With these filters, I try to trick myself into thinking, oh, I'm doing something very amazing. Like, not kidding, मेरे फादर को गुस्सा आता है तो वो मारते हैं। अरे हाँ, तो मारा तो नहीं, मुझे तो कभी नहीं मारा मेरे फादर ने। हाँ, एक बार ऐसे छोटे में तो, छोटे वक्त तो मतलब मुश्किल से 2 या 3 बार के अलावा कभी नहीं मारा मैंने मुझे। हाँ, मम्मी ने बहुत मारा है मम्मी ने भाई, पूछे ही मत, मार के सजा देती थी मम्मी तो ऐसा। योक्ष भाई 10th में जी फाड़ मेहनत just to prove under root to is irrational. Hell nah. Hey bro, I don't even know like under root irrational. What's irrational? मैंने भाई हिंदी मीडियम का हूँ मैं, अगर तू अंडर रूट समझ में आता है, बट इरैशनल क्या होता है ये पता नहीं। हिंदी मीडियम से पढ़ी है मैंने, मेरी हिंदी के शब्दों में बात कर। अब तो भूल गया यार जो मैं था थी सारी। भाई तो कितनी एज का है? या ऑफ कोर्स रियल एज। हिंदी मीडियम में फिर भी 10th में जी फाड़ मेहनत। तो भाई तू 18 साल का है प्रो, तूने एंटर ही किया है अभी तो तू 18 का ही है, तूने अभी तो एंटर ही किया है, अभी तो देख क्या क्या होता है। भाई मैं 25 का होने वाला हूँ, हाँ 24 का ही हूँ वैसे तो। अभी तो लाइफ के 2-3 साल और वेट करिए भाई, झूठ मत बोल, शुरू में ही इतनी बुरी हालत है। डैम ब्रो, I know how it feels right after getting out of your school. Like you have no idea what to do. Like, should I do college, and what am I gonna do after college, and all that stuff. Like, that's when you realize, like, you're getting back. ओ अभी तो भयंकर बातें तो स्ट्रीम रूस 24 वाली करता है, लाइक योक्ष बड़ा करना सीखो इन ऑल या आई डोंट नो व्हाट टू डू। अरे वो तो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। नहीं हम अच्छा, मुझे तू करके बात करता है, ये मेरे से छोटा है ये अक्षत मुझे तू करके बात कर रहा है तू, और इससे आप दही एम ब्रो। एक आया था थोड़े दिन पहले, मैंने उसे थोड़ा गलत, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने बोल दिया, वो सूला का ही था, वो भी बकचोदी करता था। क्या भाई, मेरे से इन्फ्लुएंस हो के थोड़ी कोडिंग ही कर लेता भाई क्या गाली सीख ली, सॉरी
ये से नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा. Ma, truly, I thought you were my age, but you're not. Damn, you're younger than me. You have just entered the phase. भाई योग से चूतिया बना रहा है, पता नहीं भाई, जो भी है. अब जो भी है, बट करो. कुछ ना सीखने से अच्छा है ना. I know you are older than me, but I think I see many things in life. You have seen many things in life. Okay. Like मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं. माँ उसका तो क्या ही बता सकता हूँ मैं, बट भाई हर का एक्सपीरियंस, हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है. ज़्यादा बड़ा तो क्या ही है, ज़्यादा कम तो क्या ही है. मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से देखा है, मैंने मेरी लाइफ को अब तक की, ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बट ये पक्का 30 साल का अनएम्प्लॉयड हाफ बॉल अंकल है. Who knows? वक्त आज है ना. मैंने सुबह बैठा, सुबह मतलब नहाया भी नहीं आज, तो सुबह उठ के बैठ गया भाई, आज तो कोडिंग करूँगा. सुबह का 10-11 बजे का बैठा हूँ मैं. फिर मैंने 1 घंटे तक तो मैंने थोड़ी कोडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करी कोड वॉल्स पे, थोड़ा चालू कर दिया मैंने. फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया. फिर मैं घर वालों पे, घर पे सब्ज़ी पसंद नहीं है मुझे, तो खुद की सब्ज़ी बनाई मैंने, उसमें 1-1.5 घंटा खराब. फिर वो खा रहा था, फिर यूट्यूब देख रहा था, फिर पता नहीं क्या ही कर रहा था. सारा टाइम वेस्ट कर दिया भाई, आज तो भयंकर टाइम वेस्ट किया है. और अभी तक कुछ नहीं किया मैंने. अभी तो आज का गोल है कि 4 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करी मैंने बस. फिर अभी तो ये है कि ये कर लूँ आज का, एंड रिएक्ट वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा मेरा इसका. मतलब बेसिक वाली रिएक्ट, एंड इसके थोड़ी चैलेंजेस भी हैं, माई प्रॉब्लम्स जो भी है वो भी पूरा करके इसमें काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट बनेगा थोड़ा सा. आज के लिए ये वाला ही करूँगा मैं, फिर देखूँगा फिर कल क्या करना. भाई टॉक्सिक आ रही है 19 मार्च को, बढ़िया मूवी लग रही है. सॉरी टू हाइड एज, बिकॉज मुझे लगा था आप इग्नोर कर दोगे एज सुनकर. नहीं यार, मैंने शायद पहले भी पूछा होगा तुझसे, तूने 22 समथिंग बताया होगा शायद. मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते दिस टाइप ऑफ मूवी, सो नॉर्मल नेटफ्लिक्स कभी कभी. वाज दैट टॉक्सिक? पेरेंट्स अलाउ नहीं करते? तो छोटा है भाई, तो बड़ा छोटा है भाई. अबे क्या है वे जो यार टट्टी थी मूवी, सच में देखा क्या है, गंदा था, गू है. ये गोबरचा मूवीज अच्छी नहीं लगती भाई मुझे. जब भी मुझे हर्ट होता है बिकॉज ऑफ कंपेयरिंग, मैं कोई नॉर्मल सॉन्ग चला कर हेडफोन लगा कर क्वेश्चन सॉल्व करने लगता था. नहीं यार, 20 बताई थी. 20 टॉक्सिक का ट्रेलर देख लो. आपके भी नहीं करेंगे. सॉन्ग लगा के क्वेश्चन सॉल्व, तभी 64 मार्क्स आए तेरे.
74. एक्चुअली अगर शांति में कुछ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना तो ज़्यादा सॉल्व होता है इंस्टेड ऑफ लाइक listening to songs on your headphone. दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है. मैंने भी किया बहुत ही है भाई. सॉरी भाई, 10 काम कर दिया गलती से. तू बड़ा टॉपर है साले. कितने आए थे तेरे 10th 12th में? कितने आए थे? अक्षित है ना ये टॉपर वाला बंदा है भाई. मुझे ये ना ऐसे बंदे है ना बेकार लगते हैं साले. मैं BC फ्रंट एंड करने के टाइम पे सॉन्ग लगाता हूँ, वो भी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है. मैं कुछ नहीं लगाता भाई. ये हेडफोन्स ओनली फॉर नॉइस कैंसलेशन. आई मीन व्हाटएवर दीज आर. कुछ नहीं बज रहा इसमें. I don't like to listen to anything. मेरे 10th में 69, 12th में 74. नहीं है मैं कुछ नहीं खाता. लेक्चर देखा, प्रैक्टिस है. What about you अक्षत? तेरे 10th 12th में कितना आया था? मेरे तो पूछना मत साले. क्या मत दियो. चाहूँ तो अभी टॉप कर लूँ कॉलेज में, बट मैं स्टिल नंबर 3rd पे रहता हूँ क्लास, ताकि मुझे अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिल जाए कॉलेज से. ये कर दो वो कर दो. नहीं है हम. भाई बहुत बेकार लगता है भाई. 10th में 88 89. Fuck off, get the fuck out of here man. मेरा है ना हर बार 70 वाली लाइन होती है ना, उसी में रहता है मेरा हर बार. कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं, 70 वाली लाइन से ऊपर नीचे जाता ही नहीं है मुझे. हर बार की बात है. इवन मेरे N4 में भी 70% के करीब आया था. मतलब ना 70 वाली लाइन में 78 समथिंग कुछ करीब आया था. तू देख लेना अभी मेरे नंबर कंपेयर करके. एवरेज वाला ही आता है, अबव एवरेज आता है, मतलब एवरेज भी नहीं. भाई अक्षय तो सच में टॉपर है. मेरे ओनली 9th में 87 आए थे. नहीं हाँ, कभी 87 से ऊपर नहीं आया. हाँ, नंबर से क्या ही होता है. नंबर के देख लेना. She's so no. एक्चुअली मैंने कभी दिया ही नहीं मेरा 100%. मेरी अदर प्रायोरिटीज़ भी हैं. मेरी अदर चीज़ें भी करनी ही होती है मुझे. फटाफट के क्या ही भाई, एक ही लाइफ मिलती है. नंबर कंपेयर करके क्या ही करोगे. याद है तो और चीज़ें करने से बनती है. बूढ़ा होके ये थोड़ी सोचेगा ओ मैं पूरे साल मैंने है ना 10-10 घंटे पढ़ रहा था मैं. तब जाके मेरा 87 बने थे. वो थोड़ी ना याद करोगे तुम. चलो आप लोग स्टडी कर लो. लेक्चर करके आता हूँ. आज कोडिंग प्रैक्टिस भी करनी है. नहीं है मैं सही पहले 100% नहीं पी लिया स्टडी में. माता कुचर के है ना ऑर्गेज़म आ जाता है. She's so perfect, blah blah. Only 9 में दिया था. नहीं है. Okay, let's start.
ओके 1 घंटा गायब। 11 बजे यार, शाम में ट्रैवल करना है यार। You also have seen silky hair like me. I am. पतले हैं मेरे बाल। बाय बाय। Okay. More complex state debugging React apps. Complex state in your previous example, the application. In our previous example, the application state was simple as it was comprised of a single integer. What if our application requires a more complex state? In most cases, the easiest and best way to accomplish this is by using the state function multiple times to create separate pieces of code state. In most cases, the easiest and best way to accomplish this is by using the use state function multiple times to create separate pieces of state. In the following code, we create 2 pieces of state for the application named left and right that both get the initial value of 0. भाई मैं तेरा वो यूजुअल टॉपर नहीं हूँ जो बस रॉट लर्निंग करते हैं और कुछ आता नहीं उनको। BC ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर PC गेम्स खेली है अर्ली 2013 में की, एंड कराटे ब्लू बेल्ट डिसेंट इन ड्राइंग। कराटे ब्लू बेल्ट नहीं हम। ड्राइंग तो मैंने भी बहुत किया। Like I think I did well in exam while doing other things. Also is because I almost has crazy level of delusion. That because मैं genius हूँ। सब गांडू है। ये चूतिया एग्ज़ाम तो कुछ नहीं किया इसके, इसे तो कर तो इसी कारण मैं इजीली कर लेता था, लेकिन अब delusion कब हो गया? नहीं है। आप कुछ एग्ज़ाम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है क्या है वह गांडू एग्ज़ाम। मुझे ये फील होता है। चलो भाई हम भी कर ही लेते हैं। और मेरा तो एक ही गोल है, कॉलेज में इसीलिए अच्छा कर लेता हूँ क्योंकि CS सब्जेक्ट ही है, काम ही आएगा और इंटर्नशिप भी नहीं है। चल भाई चालू, मैं भी थोड़ा पढ़ लूँ, नहीं तो तुम सब आगे निकल जाओगे। और कितना आगे निकलेगा? हाँ साले जानवर, तू मुझे कॉपी करने लग गया है ना। मेरी दाढ़ी कॉपी कर ली तूने इंस्टाग्राम पे, फिर तेरी प्रोफाइल रिकमेंड हुई मुझे, फिर से मैंने तेरी प्रोफाइल पिक देखी, भाई दाढ़ी कॉपी कर रहा है मेरी साले। In our previous example, the application state was simple as it was comprised of a single integer. What if our application requires a more complex state? In most cases, the easiest and best way to accomplish this is by using the use state function multiple times to create separate pieces of state. भाई वो फोटो 10th की है, BC 5-6 साल पहले लम्बाओ। Damn. जितनी बीएड तेरी अभी है मुझे 10th में आ गई थी। मुझे चाहिए नहीं भाई बीएड, कितना ही फ्लेक्स कर ले बीएड को लेकर, मुझे मेरी साफ़ हो जाए, मेरी नहीं आए तो वो अच्छा है।
बीएड का मुझे शौक नहीं है भाई. कर ले फ्लेक्स, आराम से कर. Function multiple times to create separate pieces of state. In the following code, we create two pieces of state for the application named left and right that both get initial value of 0. She's so lovely. क्या बोल रहा है? क्या फ्लेक्स करूँ भाई बीएड का? सबकी आती है, कर ही रहा है ना. जितनी तेरी अभी आती है उतनी मेरी बहुत आती है भाई. मैं देखा था नहीं. शेव कर लेता हूँ, मुझे अब पसंद नहीं है ना, इसी वजह से. टेंथ में भी बहुत ही आई है बीएड, तो में क्या ही है अभी. तेरी नजरों तो के बाबी तुम साथ हो या न हो, क्या फर्क है. जिंदगी पे दर्द है अगर तुम साथ हो. ओके, क्या करना है अभी आगे यार? 10-20 बार कर चुका हूँ ये सारा का सारा. क्या ये पे sorry. The component gets access to functions set left and set right. The component gets access to the functions set left and set right that it can use to update the two pieces of state. But कितना ही आएगा आज तो. This is not good. The components gets access to functions set left and set right that it can use to update the two pieces of state. The component state or a piece of its state can be of any type. The component's state or a piece of its state. The component's state or a piece of its state. The component state or a piece of its state can be of any type. We could implement the same functionality by saving the click count of both the left and right buttons into a single object. In this case, the application would look like that. Look something like that. State could be of any type. The component state or a piece of state. Its state can be of any type. We could implement the same functionality by saving the click count of both left and right buttons into a single object. So, in this application, in this case, the application would look something like that. ठीक है भाई, कर लेते हैं अभी. अभी मैं ये नहीं करूँगा, ये गया भाड़ में. सो कॉन्स्ट करते हैं.
कॉन्स्ट कर देते हैं अभी, क्लिक्स कर देते हैं, सेट क्लिक कर देते हैं अभी, सेट क्लिक्स सेट कर देते हैं क्लिक्स को, यूज़ का स्टेट कर लेते हैं अभी, यूज़र का स्टेट तेरा गाली वाली जनते यार। चलो ये कर देते हैं फिर अभी, और भाई साहब अभी कर देते हैं इनका नमस्कार, नमस्कार देवियों और सज्जनों। Sorry, this is also 0 0 0 0 0. Okay, left and right, left and right. Your state is gonna get to you're so lovely, la 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 la. अरे हटना भैया, भग जाए आते हैं, अरे हटना भग जाए आते हैं। I want to copy this and then console it. You so lovely, la 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 la. Okay, okay desu ne. Okay desu ne. Okay desu ne. First it does this. First it does this. Bound this passage state. Sierra stage. So lovely. You're so lovely. La 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 la. ये दिखते रह जाऊंगा भाई मैं। Left and right. Alrighty then. Alrighty then. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. What the fuck is that? Okay, Emma. Let's get back to the right thing. Const handle left click. Handler functions. Handle left click is equal to okay, const new clicks is equal to this left clicks dot left plus 1 clicks dot left plus 1 that sorry, and then right clicks
clicks dot right sorry right that's it やったさうざいwhat was that? That was all me. So beautiful. Set clicks. New clicks. Const. Handle right clicks. Right click だっけ？Okay. Const new clicks. Okay. Left. Clicks dot left. Clicks dot left. वो लेफ्ट है तो उधर का that's left, so that's why left is increasing. Right is right. Left is increasing. Right. So clicks not right to this thing. Press 1 clicks new clicksそうですねSorry, I'm just a little अरे यार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना तेरा सॉरी मैं थोड़ा भावना से बह जाता हूँ मैं थोड़ा अभी सॉरी राइट तो क्लिक किसने राइट तो क्लिक्स तो यार मैं इस पे कैसे जाऊँ ऐसे करके आ जाता यसそうだよねはいまレフトライフじゃないですऔर हट जा मार दूंगा मैं क्या हट रहा पे है इसकी sorry left is not defined どういうことですかOh, left is not defined, it's clicks defined. So it's my clicks, clicks. Oh, that's it, boy. Yeah. Oh, clicks. That's it. Stop giving me suggestions. Irritating, annoying. 1 2 2 2 okay. Nang ting lang ling lang oh so new clicks
Why new clicks though? Wait a minute. You're handling click them, boom, new clicks. Left is going to be clicks dot left. Wait. Set clicks. Set the clicks. We are setting the clicks. You're gonna set the clicks. New clicks. Why this extra thing? I see. Let's read it. Now the component only has a single piece of state, and the event handlers have to take care of changing the entire application state. The event handler looks a bit messy. When the left button is clicked, the following function is called. When the left is called, so the following object is set as the new state of the application. The following object is set. The following object is set as the new state of the application. Okay, as the new state of the application. Clicks. The following object is set as the new state of the application. Where am I? Was I? The new value of the left property is now the same as the value of left plus 1 from the previous state. I see. Okay, it clicked me. Okay, what we are doing here is over state. Okay, click state is this object initially. Let me do like this thing over here. Like imagine, god damn it, imagine this thing like this. Okay, initially this thing is equal to this. Okay, so we are doing this like click handler function that's happening. This is defined, ignore that for now, and like all this thing is doing this is running this function. Okay, is set clicks function. What it does is it actually changes or sets the state of the component. Okay, and then the whole component re-renders. So okay, we are running this function. Okay, by clicking on the button. Where was I? Okay, we are running this function. Now what's happening, that this thing goes back, boom. Okay, the state is updated. How? Okay, over left. Okay, we had the left. Now look here, like we are providing this thing here. Okay, so look at this thing. This is an object, so this whole object goes. Okay, so boom, and now the click state, which was this. Okay, we can copy it. Okay, which was this before the update of the state. Now it becomes something like this. Okay, like let's do it like that, something like that. And here the clicks dot left, initially this was 0, so this becomes 0. Okay, and this was 0 as well, goes like that. Okay, so now we can clean it like that, so it becomes 1. This stays
0, and as we click on this button, and it's gonna invoke this function, whatever, like it's gonna do something, okay, execute this function and this value will keep changing from 1 to 2 to 3 4 5 6 7 8 9, like that. Okay, that's what's happening over there, and same goes for this one, but in this case the left one stays 0 and the right one, left one says 0 and the right one goes from 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, like that. Okay, enough. What was I explaining this? Shit. Myself, I guess. The new value of the left property is now the same as the value of left plus 1. The new value of the left property. The new value of the left property is now the same as the value of left plus 1. Okay, left plus 1 from the previous state. And the value of the right property is the same here. Okay, I can say that is the same as the value of the right property from the previous state. We can define the new state object a bit more neatly by using the object spread syntax that was added. What up? Sup, Enfield? After a long time. It's been almost a week. Me back. It hurts. Actually half a week. Was I audible? Did you hear me say hi, Enfield? Well, I'm gonna say it again. Hi, what's up? Sup? I just burped. Bourbon. What's a bourbon? Bourbon. The new value of the left property is now the same as the value of left plus 1 from the previous state, and the value of the right property is the same as the value of right property from the previous state. We can define the new state object a bit more neatly by using the object spread. We can define the new state object a bit more neatly. We can define the new state object. New state object? What the fuck? We can define the new state object a bit more neatly by using the object spread syntax that was added to language specification in the summer of Dogeza. Zubredo. Zubure. Sorry. Spread syntax looks like the rest syntax in a way. Spread syntax is the opposite of rest. Spread syntax expands an array into its element, while rest syntax collects multiple elements and condenses them into a single element. See rest and rest the way. So it's like that. Okay. Left for waifu, right click for laifu. Hi.
Waifu Laifu. We can define the new state object a bit more neatly by using the object spread syntax. That's what added to the language specification right in the summer. Const handle left click const clicks clickety click clickety click clicks like that. What need to do that? Back to JavaScript today. No, it's React. Can't you see it? Come on, bro. You have done React. Look at the thing. It's React. You can't see it, I guess. That's React. I'm doing React. I see React. Handling arrays and all that. I mean, it's kind of. I'm not React. The thing looks the same as. So yeah. I am blind. Damn. Blind by brain. Today. Bro's blind by brains. No brains today. Today. What if I talk in my this accent? Would you like it? Almost 2 years ago, I had this kind of accent. It's a little soft right now, but so much of a tongue work. The T sounds are so tough. Handle click function. Okay. Bare niwa. Ware. Why are we doing that? Click. Clicks. I'm afraid that's all I have. The syntax may seem a bit strange at first. In practice, spread clicks creates a new object that has the copies of all of the properties of the clicks object. When we specify a particular property, write and clicks write one. Clicks write one. The value of the right property in the new object will be 1. But my ass. God damn, I'm so dirty. Dang, rip mic con. What happened? What happened with the right mic con? I'm audible. What are you talking about, Bean? What are you talking about, Bean? I'm afraid that's all I left. Can I get some? You smacked it, right? Did I?
Can I smack my mic? Did I smack my mic? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Shut up, yaar. I'm so... This syntax may seem a bit strange at first. In practice, spread clicks creates a new object that has copies of all of the properties of the clicks object. The syntax may be in practice. Clicks creates a new object that has copies of all of the properties that has the copies of that has the copies of all of the properties of the clicks object. When we specify a particular property right in clicks right one, the value of right property, the value of right property in the new object will be 1. In example above. Instead of smacking my mic, I wanna smack that ass. I wanna smack it so bad. Ma creates a copy of in the example above, creates a copy of clicks object where the value of the right. Ask your wife. Yeah, that's the problem. I don't have a waifu na. I don't have na. That is the problem na. Creates a copy of the clicks object where the value of the right property is clear. क्या बोल रहा हूँ मैं? Creates a copy of a clicks object where the value of right property is increased by 1. I'm afraid it's so rough here. Can I do it? Smack your wife's ass and say that and say that's how I say hello. Nah, man, I'm not smacking that ass. I'm not that zulmi. I'm not that. I'm not a rough guy, you know. I'm not gonna slap it. I'm not gonna smack it. I'm just gonna... yeah. Assigning the object to a variable. Yeah, bro. Assigning the object to a variable in the event handler. Oh, by the way, Anfield, I made a new server. Oh, it's not in the description. I should put the link in the description. I'm afraid wait a minute, let me put the link to my description. Of the Discord server. Is it me or is it just you? Can you do that for me? Can you shake that ass for me? Waifu, can you shake it? God damn, I'm so dirty. What's wrong with me?
Nice. Assigning the object to a variable in the event handler is not necessary. Assigning the object to a variable in the event handler is not necessary. We can simplify the function to the following form. Yeah. You see, you want it. Of course I want it. I want that. I want it, boy. I want it so bad. I want it. When am I gonna get that? When am I gonna get that? Somebody please give me a waifu. Waifu. Oh, papara. Do. I want a waifu that says do. Oh my lord. I will melt. I'm gonna melt if my wife sees that. Why? I'm afraid I don't need to now. I don't even need that. I just want a waifu. Will say that other one. What?ご飯にする？お風呂にする？それとも私 Bro has fantasies. Bro's desperate. You're desperate. That's what you are. You are desperate, my boy. I'm afraid that's all I've got. Yes. I will make my waifu say that now. One day. ご飯にする？お風呂にする？ご飯にする？それとも私Bro. I'm gonna make her say that. I'm afraid assigning the object to a variable in the event handlers is not necessary, and we can supplement the function to the following form. Some renders might be wondering why you didn't just update the stage directly like this. Do it for content. What do you want? Like I should What are you saying? Do it for content. I'm gonna do it for my peace. Not for you people. I'm gonna do it for me. Yeah, fuck the content.
Sheesh. Of course. No sheeshing. Oh. Oh, now. Oh. So, I know what's happening over here. Like, I'm gonna explain it. First, let me read this first. Some readers might be wondering why we didn't just update the street directly like that. This. Well, my boy. That's not a good idea. Sorry. Sorry. The application appears to work. However, it is forbidden in React to mutate state directly. Since it can result in unexpected side effects. Changing state has to always be done by setting the state to a new object. Changing state has to always be done by setting the state to a new object if properties from the previous state are not changed. If properties from the previous state object are not changed, they need to simply be copied. If properties from the previous state object are not changed, they need to simply be copied, which is done by copying those properties into a new object and setting that as the new state. Storing all of the state object is a bad choice. Storing all of the state in a single state object is a bad choice for this particular application. That's no apparent benefit, and the resulting application is a lot more complex. In this case, storing the click counters into separate pieces of state is a far more suitable choice. Storing all of the state is a single state object. Storing all of the state in a single state object is a bad choice for this particular application. There's no apparent benefit, and the resulting application is a lot more complex. In this case, storing the click counters into separate pieces of state is in this case, storing the click counters into separate pieces of state is a far more suitable choice. There are situations where it can be beneficial to store a piece of application state in more complex data structure. The official DI documentation contains some helpful guide. Sorry. Okay. Sorry. It doesn't go up like that. Soritomo watashi. Okay, this is the state. Click. Again. So originally this is the state, okay.
so la 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 la. So this thing is gonna make a copy of this thing, and technically it's equal to this. Technically, I mean exactly whatever English is go, and now. I'm gonna sleep for like 10 minutes, okay? And then I'll be like, coding is fun, right? Yeah, it's fun, so fun. Damn, yeah, I'm having fun. You know, like, I don't wanna do anything, man. I just wanna be in my bed and just watch something, watch a lot of movies. That's all I wanna do. Yeah. Well, it's 12. It's 12 midnight 00. I mean, it's like it's almost time to sleep. Today I woke up at 10 a.m. At 11 a.m. I sat in front of my PC and thinking that I was going to code. And then I thought of doing some coding challenges. So challenges, I mean solving some questions. Solved like 4 questions off stream because I didn't want to stream that thing. And then got, after like 1 or 2 hours, I got distracted, and then I wasted the whole day. Then I started the stream. I wasted 1 hour. I don't know, talking about random stuff. I don't have fucking energy now. I can't think now. Bro, what the fuck? You'll have fun once you can make money. Of course. God damn it. I wanted to finish this today. Black and white.
Black and white. Am I gonna have to do this again? She saw me the same thing. After a week, Hamido Sensei is back. हटना भैया इसकी. Somebody please give me money so I can get my eyes checked. Actually, money is not the problem. I just don't wanna go out. I don't wanna go out, man. This is the only thing that I hate. Going someplace. Damn. I don't even like going to some neighbor's house for something. Going to a fucking doctor in the city. Oh my lord. He finally learned how to code out hello world, so he's back. I'm tired, man. Why? What happened to your eyes? My numbers have increased. My eye. You hate going outside without a waifu. And I went to India, man. Even if I had a waifu, I wouldn't go out. I mean, not the whole India. Like, I'm not talking about India, man. It's my neighborhood. I have nothing over here. India is beautiful. And there are beautiful places too over here, but I don't live at those places. That's why. Fucking my place sucks. What's your number? Number. Is it negative? Yeah, it's negative. I think it's around 2 now. I'm not sure, but I think it has gotten worse. Like my eye visibility, the distance, like I can see things clearly at like two or maybe less feet distance. Like 2 feet distance is my eyes can see, and beyond that, like everything gets blurry. Yep, 100% India is beautiful. Yeah, I mean, there are beautiful places too. I mean, my brother is like 3. Damn, just move out to Japan, then you can. Just move out to Japan, then you can go out midnight and go to 7-Eleven or Family Mart for drinks and sheesh. Oh, sheesh. Of course. I have a headache. Fucking, I was doing a challenge. I think I'm gonna have to reset that challenge. God damn, I fucked it up. Whenever I try to do something, like somebody comes at my house and then my whole plan, I'm just blaming people, man. It's me who doesn't want to do anything. What? I think it's -3 on both sides. Damn. Bro is blind. It's Nazar.
नज़र लग गई उसे. You have a headache, cause of evil eye. I mean, I have myopia. It could be a pseudo myopia too. Just get AI eyes. Gift me some AI eyes. I will take it. I will take it. I will take it. I will take. I will take those I want that. Bro, you are intelligent and people are not rich. Bro, you are intelligent. You are intelligent. Who, me? Damn. And people are not rich. Sometimes people get jealous. I don't get it. I'm not intelligent enough to understand what you just said. If I was intelligent, I would be rich. Same, I don't get it. Damn. I guess we are not intelligent. If he was intelligent, he wouldn't be streaming on YT to AM. Lol. I have zero concern about my health. It means my English is bad. Try again. Bro, you are intelligent. Okay, he's saying that to me. I'm intelligent and people are not rich. I'm intelligent and people are not rich. But I'm also not rich. Do you think I'm intelligent and I'm rich? No. If I'm not rich, then I'm not intelligent. But people get jealous of me. People get jealous. Who? Me? People are getting jealous of me because I'm intelligent and they are poor. They are not rich. But I'm also not rich. That means I'm not intelligent. This doesn't make any sense. Bro, I want a wife, man. So bad. When I said people are not rich, I said not nice. Ah! Okay, I'm done that. He wants a wife who's so badly. He wants to cuddle. Yes! Yes! I want to cuddle someone. I want to cuddle. I want to muddle. I want to fuddle. What's a fuddle?
I also want a cute Indian. You can have all the Indian wives. Take it. I don't want it. There are cute wives, but I don't want. I want a waifu. You want a wife? I want a waifu. My Indian waifus are cute. Yup. But they're thinking that doesn't match with me. I don't vibe with it. I don't vibe with what they think, okay? What they're thinking, so that's fine. You can take it. Hamid was an Indian waifu. I also want a cute Indian waifu. He wants a lot. He wants a Pakistani waifu, Indian waifu. He can marry 4 wives. So he's gonna have a Japanese waifu, Indian waifu, Pakistani waifu. And the 4th one is like temporary waifu. He's gonna change the 4th one at every month. I only want one, man. Then decide on one. Which one do you want? Indian? Japanese? Pakistani? What do you want? Dang, want many waifus. Nepal. He was a Nepali waifu too. Damn. Bro wants everything. Yeah, sometimes I wonder, like, the people who have 2 or 3 wives, damn, they have fun. Amit wants any. As long as they are cute. Damn. Yeah, I have a dirty brain. Don't make joke, man. I'm literally serious here. I want you. But like having Monday waifu number 1, Tuesday. No, Monday 2 waifus, Tuesday 2 waifus, Thursday 2 waifus, all week 2 waifus. You don't get it. Threesome is better. Damn. Yeah, Benfies as long as they are cute and brown. Damn, brown. Monday is chest day. Tuesday is back day. Damn. What do you say? Monday you play with chest. Tuesday you play with back. Wednesday all. Oh, fucking A. What the hell? I was talking about my couch bed. But we are talking about waifus. Why are you talking about workout? Huh? Now I'm following
pull, push, lag. Damn. Pull, push, lag. Bro, I have wasted today. I'm just fucking wasting my time. Me time. Wasting today. Stop wasting your time. I want to. I don't want to talk about my future wife. Damn. Bro is conservative. Cause I am not seeing my future when I get married. And stop dreaming about it then. I want a brown Indian waifu. Shut up! You can't get it. You can't. I said can't, not can. Make it reality. 오라와 오이라와 인도진 스마가 오시 Damn. Hey, you know what? Instead of wasting my time, like I don't have brains for coding. Oh my lord, I could have finished it. Oh. Okay. Give reactions like I'm having. No. Okay. What? That's actually I've. Can I restart the stream? I'm gonna restart the stream. Okay. Sorry guys. Chairo no kanojo. Damn. I'm restarting the stream.